But none of them believed me. Yep, you're right. There'll be an extra fee for that. Exactly. But none of them believed me. There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. Hello, Bilal. I can do. Livestream है आज. Livestream. बहुत बढ़िया. हालचाल. कैसे हो आप? ओपन कर लेते हैं. हेलो राघव भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल? genshinimpactfanart. सब बढ़िया. Book learning alone is not enough to cultivate Special intelligence. program live All stream. those scholars in the academia are prime examples. तो चलो. Release कर लेते हैं अपना. कितने दिन बाकी है बैनर से? कितने दिन बाकी? 3 दिन बाकी है बैनर के. तो 3 दिन बाकी है, मतलब 4, 5, 6 सोमवार. रविवार को 5 तारीख है. रविवार 5, 6 को सोमवार, मंगलवार, बुधवार. बुधवार को आएगा अपडेट. आएगा बुधवार को. बुधवार को अपडेट आएगा. 8 तारीख को. जाना है अभी. इधर जाना है. तो वहां चलते हैं. वेडनेसडे को आएगा. हाँ, बुधवार को आएगा. बुधवार को सुबह आएगा. मेरे तो फुल सब रेडी है राघव भाई. फुल सब रेडी है मेरे. कुछ ना को पुल करना है बस, है ना. मेन अकाउंट पे तो रेडी है. इस अकाउंट पे बीटी बिल्ड हो गई है. बस फुरीना की इंतजार है. अरे ये पीछे चला गया. अरे पीछे चला गया. पीछे चला गया. नया कंटेंट आएगा, मजा आएगा. Take it easy. अब बाकी है एक तो चीज बाकी. हेलो फायलॉट भाई, कैसे हो? हेलो एक्चिको भाई, क्या हाल है? वेलकम. ओह बहुत बहुत शुक्रिया फायलॉट भाई.
होंका स्टाइल का भी आज लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम। ओ अच्छा, होंका स्टाइल का भी। हेलो आरजी मास्टर भाई, कैसे हो? वेलकम। कैसे हो मास्टर आरजी भाई? सब बढ़िया, हालचाल। फैन लॉर्ड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिन्यू करने के लिए मेंबरशिप 1 महीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आज होंका स्टाइल का भी है, होंका स्टाइल का भी है और जेंशन का तो है। होंका स्टाइल के बाद में करूंगा, पहले जेंशन तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, जेंशन करने के बाद फिर होंका का देखेंगे। हम्म, मैं बढ़िया, आप सुनो भाई। हाँ, अरे वो थोड़ा सर्दी खांसी है आजी भाई, बुखार, दवाई उवाई ले रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। बस चल रहा है आप लोग की दुआ से। क्या करूं? टोपैज नहीं मिल रहा भाई, मिल जाएगा, अभी भी वक्त है, मिल जाएगा। अभी भी थोड़ा समय है, मिल जाएगा। Take it easy. 3 दिन बाकी है, शायद 3-4 दिन बाकी है ना, मिल जाएगा। 47 पीटी हो गई, अभी तो मुश्किल लग रहा है। Take it easy. अगर नहीं भी मिलते तो दोबारा ट्राई कर लेना, अगली बार मिल जाएगा जब भी आएगी। हाँ, मैं लंच कर लेता हूँ स्ट्रीम ऑन कर। ओके ओके नाजी भाई, आप लंच कर ले। Take it easy. वैसे आज लंच पे क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो आज लंच पे? Take it easy. रोटी चावल, रोटी दाल। I see everything. Here comes the cat. Here you are. घर पे दिवाली का सफाई चल रहा है, हालत खराब। क्या? अरे भाई साहब, क्या बोलूं, मुझको अगले हफ्ते से सफाई करनी पड़ेगी। जल्दी से दवाई ववाई पीकर तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिवाली की सफाई बहुत बहुत झंझट का काम होता है, बहुत परिश्रम का काम होता है वो, Quietly now. बहुत आसान नहीं है। मैं तकलीफ समझ सकता हूँ। अगर घर बड़ा हो तो साफ करने में बहुत समय लगता है, एक दिन पे तो साफ नहीं होगा, 4-5 दिन लग जाएगा। छोटा घर हो तो दिक्कत नहीं है, काली दाल और चावल, वाह क्या बात है। हाय चिको, हेलो। अच्छा, लाइव स्ट्रीम है 5 बजे, 5:30 बजे लाइव स्ट्रीम है। कोई तो ऑफलाइन नहीं लोग। Wait. Ad Astra Abyssosk. Thank you for complete. Ad Astra. के लिए सब रेडी कर चुका हूँ मैं। पुरीना आ जाए, है ना, पुरीना के लिए सब रेडी है, सब रेडी हो चुका है पुरीना के लिए। आर्टिफैक्ट में सब रेडी है। क्या स्टैंड यहाँ पे हाइड्रोकोप्लेट देना पड़ेगा उसको, हाइड्रोकोप्लेट ऑफ पीस हाइड्रोकोप्लेट दे दूंगा, हो जाएगा। आज इनको दोनों स्ट्रीम रखना था कि जेंशन का भी और होंगे का। यार ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दोनों एक साथ कैसे देख पाऊंगा मैं? ये तो बहुत कठिनाइयों का सामना हो जाएगा। दो बॉयज एक साथ आएंगे, कान दो बॉयज एक साथ आएंगे फायर लॉर्ड भाई, तकलीफ होगी। मैं तो जेंशन का देखने के बाद फिर होंकाई का देखूंगा, कि दो चीज एक साथ देखना मुश्किल है ना। दो वॉइस एक को म्यूट करना पड़ेगा, एक स्ट्रीम को म्यूट करनी पड़ेगी। होंकाई का म्यूट कर सकता हूं मैं, होंकाई का म्यूट करके टेंशन का साउंड ऑन रख दूंगा।
अब इसको करना है ना, ले लाइन, मेरे पास ले लाइन है, एक ले लाइन तो होगा, एक तो होगा, एक भी नहीं है मेरे पास। वाह, एक भी नहीं है। इतना भिखारी हो गया हूँ कि एक भी ले लाइन नहीं है मेरे पे। लगता है जाके काम करना पड़ेगा। और वैसे इसका हालत कैसा है? इसका हालत तो लगता है ये करनी पड़ेगी। आज खुला है ना, दुकान खुला है, आज दुकान जा खुला है। कल नाम काजुआ है बरड़े। प्रणाम आपको, कैसे हो काजुआ भाई? आज तो लाइव स्ट्रीम है, 27 तारीख को होना था लेकिन वो डिले हो गया। आज होने वाला है। डिलीजेंस भी चाहिए था ना इस लड़की। हाँ, उठाओ को तो डिलीजेंस चाहिए। तो कैसे हो आज? बढ़िया। 5:30 बजे को है लाइव स्ट्रीम। पाँच मैं ये कर लेता हूँ। Stabilize. Gotcha. Body and mind. Here comes the test. Witness the power of Gugwa. Go. Cross over. Order guide you. Quiet now. No, my sword. Let me weave you a verse. Things are about to get dicey. चलो, वैसे भी होंकाई का 5 बजे स्टार्ट होगा लाइव। ओ अच्छा, 5 बजे होगा तो ठीक है, लगा दूंगा मैं। दो टैब लगानी पड़ेगी है ना, 2 टैब लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं ना। कोई इधर कोई इसको feel like it might have been me. Oh, my heart is just beating out my chest. Me too. On this iPad, we have who's been eliminated. All right, people are saying servers up. I'm checking. यही है ना होंकाई, ये ऑफिशियल है ना, यही है ना, यही साइड। आई एम एट 65 पिटी गॉम्बा करने का मन कर रहा है लेकिन रायतलेसली और बेटी नहीं चाहिए। शुड आई सेव फॉर रेडन और फुल रेडन? आई डोंट हैव रेडन। मुझे लगता है कि आप 4.2 पूरा स्किप कर दो और रेडन निकाल लेना काजुआ भाई। 4.2 पैच आप स्किप कर दो। अभी तो बस 3 दिन ही बचे हैं बैनर के, तो मेरे हिसाब से आप 4.2 स्किप कर दो और रेडन के लिए सेव कर दो, वही सही रहेगा क्योंकि राइडेनशोगन तो अकाउंट पे चाहिए ना। अरे सौरभ वाईटी पर होगा, वाईटी पर होने वाला है। अच्छा यूट्यूब पे होने वाला है, कुछ पे नहीं होगा क्या? तो कोई ना 5 बजे लगा दूंगा।
और पुल फॉर फुरीना, फुरीना और पुल फॉर फुरीना। फुरीना आज लाइव स्ट्रीम पे पता चल जाएगा फुरीना के बारे में। फुरीना वो ऐसे सपोर्ट होने वाली है, वो डीपीएस तो नहीं होने वाली है, ऑन फील्ड सपोर्ट है। काजुहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया लिंक सेंड करने के लिए, लिंक सेंड करने के लिए। मैं लगा दूंगा ये। फुरीना ऑन फील्ड सपोर्ट होगी, ऑन फील्ड क्या ऑफ फील्ड सपोर्ट है फुरीना, नहीं था जैसी। तो आर्कॉन है, अगर आपको डैमेज डीलर चाहिए तो रेडन ले सकते हो, अगर आपको सपोर्ट में चाहिए तो फुरीना ले सकते हो। मेरे को हिसाब से अगर आपके पास गारंटी है, अभी आपका अगर गारंटी चल रहा है तो आप फुरीना निकाल लो। अगर आपका 50-50 है तो अगर आप फुरीना पे बाई इन केस अगर हारते हो तो आप रेडन गारंटी, आपका रेडन गारंटी हो जाएगा, ठीक है, तो रेडन निकाल लेना। और अगर आपका 50 मतलब अगर 50-50 जीत जाते हो और फुरीना निकल जाता है फिर रेडन पे लास्ट डे पे ट्राई करना, वही बोलूंगा। तो फुरीना हीलिंग करने और सपोर्ट करने वाली है ऑफ फील्ड। हाँ ऑफ फील्ड में दोनों सपोर्ट करने वाली है लड़की। कॉपी लिंक, हाँ ऑफ फील्ड है वो। Toodaloo. यार Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly आज दोनों लाइव स्ट्रीम एक साथ भाई, दोनों लाइव स्ट्रीम एक साथ आज। This is order. Stabilize. Quietly now. I hope Raiden comes in second half of 4.3. अगर second half 4. If she comes in second half of 4.3, then you will have enough time to save for Raiden. You can pull her on the last day, on the second phase, and you'll have a greater chance to get her. Kazuha, right? So if she comes in second phase in 4.3, then you can have both Furina and Raiden. Just hope she comes. अब है लाइव स्ट्रीम 5:30 बजे को है बॉयकॉट भाई। 5:30 बजे को 5:30 बजे को है। होंकाई का है तुम्हारा 5 बजे, 5:30 बजे। ये इसका भी है 5:30, दोनों का एक साथ। पता नहीं क्यों वॉयवर्स वाले ऐसे कर रहे हैं। Who is your profile picture, brother? 5 बजे को है जेंशन का भी और होंकाई का भी, दोनों एक साथ आज लाइव एक साथ होने वाला है दोनों का। वैसे कभी होता नहीं है, पहली बार हो रहा है। तो मैं जेंशन का ही देखूंगा, होंकाई का थोड़ा वक्त नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं होता है, कौन बात नहीं होता है? सॉरी फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक। कोई बात नहीं होता है, कौन बात नहीं होता है? कोई होंकाई पे बात नहीं होता। होंकाई स्टारवेल एक गेम है, टर्न बेस्ड गेम है, वॉयवर्स का ही गेम है भाई। इसका भी लाइव स्ट्रीम है 1.5 का। अजीब बात है कि आज इसका भी लाइव स्ट्रीम उसका भी लाइव स्ट्रीम एक साथ, दोनों का कभी होता नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।
इसका भी लाइव स्ट्रीम, इसका भी लाइव सेम टाइम एक साथ। मतलब ये कुछ अजीब है। नहीं उनका क्या चक्कर है भाई, है ना? देखो क्राफ्टिंग करनी थी, कर रहा था ना। Oh, I thought it was gonna be impact. Oh no, it's not impact. It's a different Honkai. I mean, it's the same Honkai, but it's Star Rail. Impact Third is. But the thing is, Honkai Impact Third has relations. Both Honkai Star Rail and Honkai Impact Third has sort of connection. Like most of the characters are similar from Honkai's Impact Third, like Welt, Himiko, and all other Seele, like all these characters, Silver Wolf, like yeah, both simplified from Impact Third to Honkai Star Rail. But their character design are different than from Honkai Impact Third. Star Rail has a different. They have a different kind of personality and and outfit, but they are quite similar. Hey, क्या करना था? मेरे को काम करनी पड़ेगी ना, काम नहीं है मेरा, काम कर लेता हूँ एक मिनट। When Fisher in Star Wars, Copium talks. Fisher in Star Wars. I don't think there is any Fisher in Star Wars, but there is one similar. She plays guitar. Well, she is kind of similar to Fisher, but she has a lot of different personality. Not like Fisher at all. But the common thing between both of them is they are both electro. In Star Rail, it's called lightning. Electro is called lightning in Star Rail. So electro element is called lightning. Pyro is called fire. There is no geo in Star Rail. Geo element in Star Rail. There is Anemo. Anemo is called wind, a wind element. And there is similar to Geo, but it kind of looks like yellow. I think it's called imaginary. So is an element similar to Geo, but it's called imaginary. It looks like yellowish. Like this, Geo looks like gold, but that looks like yellow. So a lot of similarities are there from Genshin as well, like the element wise. Witness the power of good games up from silver. Order guide you. Gotcha. Let me read you a verse. Things are about to get dicey. अल्ट आजा भाई। Oh, Fisher and Catching are in Impact Third in this. Yeah, they are.
Not much time left. I think we're getting there. 88 minutes left for the live stream. $88 मिनट्स बचा है लाइव स्ट्रीम के लिए। This is order. 88 Rain outlines your Minute. fate. Witness the power of Kawa. ये कर लिया। कर लो। चार्ज अटैक मारा। अरे तू खंबे पे मत उठ भाई। खंबे पे क्यों उठ रही? हाँ? खंबे पे उठने के लिए किसने बोला तेरे? किसने बोला तेरे को? No, my sword. Let me weave you a web. तू कहाँ चला गया? Order guide. Solidify. Yeah. 88 मिनट्स लाइव स्ट्रीम 5 को है या 5:30? 5:30 को है। 5:30 5:30 को है। क्या तो आ रहा है 5:30 5:30 बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है 5:30 है। ये 5:30 को है। खंबा इज लव। सही बोला है ना? ये भी 5:30 को है। इसका टाइमर यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसका टाइमर से मुझे पता चल जा रहा है कितना इसका यहाँ पे टाइमर है। इसका एक ट्विच पे टाइमर नहीं दिखाता, लेकिन ये ट्विच का है। ये होंका स्टार डल का भी ये दोनों एक साथ। अजीब बात है। पहले कभी मैं तो जेंशन का ही देखूंगा, फिर होंका स्टार डल का बाद में रिप्ले देख लूंगा। हेलो करण भाई, कैसे हो? वेलकम वेलकम इन। आज तो लाइव स्ट्रीम है करण भाई। 5:30 बजे को लाइव स्ट्रीम है 4.2 का। 4.2 की लाइव स्ट्रीम। Witness the power of Kawa. This isn't good. Start over. Stabilize. Busted. No, my sword. Let me weave you a web. Here comes the catch. आपको वेंटी मिल गया? आपको वेंटी चाहिए था ना? फिर तो 120 मिनट होने चाहिए रिमेनिंग। अभी तो 3:30 हुआ है। 10 जेंशन स्ट्रीम। इनका कोई टाइम ठिकाना नहीं होता, क्या ही करें। नशे कर रहे, सस्ते नशे चल रहे हैं भाई। सस्ते नशे कर रहे हो वर्ष आज। यार मैंने तो वेंटी फुल कर लिया। अरे बधाई हो बधाई। कैसा लग रहा है वेंटी? वेंटी यूज करने में मजा आ रहा है? हवा पे उड़ा रहे हो एनिमी को? हाँ मिल गया 78 पर। अच्छा मिल गया। अभी कौन सा पुल करने वाले हो? हाइड्रोआर्कोन? हाइड्रोआर्कोन पुल करना। 50-50 जीत जाते हो तो बहुत बढ़िया है ना। आर्क हाइड्रोआर्कोन निकल जाएगी। कोशिश करना आखिरी दिन तक निकल सकता है। मैं तो कोशिश करूंगा। वैसे मेरा मेन अकाउंट पे गारंटी है। मैंने रायफल पे ट्राई किया था, मिला नहीं मेरे को, चीजी मिल गया। तो अभी गारंटी है मेरे पे। पहले लबीस में अच्छा काम कर लेता है वेंटी। हाँ काम तो अच्छा कर रहा है। छोटे छोटे एनिमीज को हमें भी उड़ाता है। वो जो ऊपर फ्लावर होते हैं, ऊपर फ्लावर तो जो एनिमी है उसमें वेंटी ज्यादा अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से। मैंने जितना तक लोगों को देखा है और मैंने भी
मैंने वैसे यूज नहीं किया है, मैं काजुआ यूज करता हूँ, लेकिन मैंने जिन लोगों को देखा है वेंटी यूज करते हुए, वो सब जो एनिमीज होते हैं वो जो आग के गोले आग के गोले छाप उठते हैं ना, वो एनिमी फ्लावर ऊपर फ्लावर बहुत एनिमी होते हैं वो अब इसमें, उसके लिए वेंटी बहुत ही अच्छा है। कुछ कुछ सिचुएशन में वेंटी काम आता है, बहुत अच्छा काम। सही किया आपने पुल करके मेरे हिसाब से करण भाई, अभी टेंशन फ्री है ना करण यार। कितना है? हाँ बट मैं एक का सोच रहा हूँ। अच्छा रेडेंशोगन, हाँ रेडेंशोगन आप बिल्कुल पुल कर सकते हो। 4.3 में आने वाली है रेडन नबिया के साथ। वैसे लग रहा है कि फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे आएगी, ये गारंटी के साथ बोल नहीं सकते कब आएगी, लेकिन देखते हैं। तो एक हफ्ते या 2 हफ्ते, एक हफ्ते के बाद पता चल जाएगा, लीक आने शुरू हो जाएंगे कि फर्स्ट पेज में आने वाली है रेडन या सेकंड पेज में आने वाली, वक्त आने पे पता चल जाएगा। How's it going? It's going well, Umaid. Hello, Shashi bhai, कैसे हो? Welcome. It's going well, Umaid. How about you? How's life going for you? How's your study going? Hope everything is going well on your end. Shashi bhai, कैसे हो? Welcome. आज तो लाइव स्ट्रीम है, 4.2 की लाइव स्ट्रीम है आज 5:30 बजे। 5:30 बजे को लाइव स्ट्रीम है आज, 5:30 बजे को लाइव स्ट्रीम है और का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है, कितने मिनट है? 81 मिनट बाकी है यार। अगर सिल्वर वुल्फ का रीजन, इफ सिल्वर वुल्फ का रीजन यहाँ पे लिख रहे हैं लोग, अगर सच्ची में आ जाती है भाई मैं तो पुल करूंगा भाई सिल्वर वुल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए सिल्वर वुल्फ तो मैं निकाल के रहूँ। ये भी बिल्ड है मेरी, बस ड्यूटी है। My life is fine, like no drama. What can I even no drama and spice. What can I even say now? तो हो गया ना। ऊपर फ्लावर, ओ ऊपर फ्लावर चाहिए। लेट्स किल ऊपर फ्लावर। गिव अवे करो तो मेंबरशिप लो। गिव अवे करो 10 क्या हो जाए फिर करेंगे। इंतजार है करण भाई, वो हो जाए तो फिर करेंगे, हो जाए बिल्कुल हो। ये फार्म कर लेता हूँ जाके। मेरे पे ये खत्म हो गया, मेरे फुटाव को टैलेंट अप करने के लिए चाहिए। Are you going to pull Hydra Argon Lumain? I still remember the time when I used to spend hours on such things. Yeah. Yeah. Yeah, I do remember that. I appreciate the support. Thank you so much. So are you going to pull the Hydra Archon Lumen? Which character are you going for? Take it easy. What games have you been playing? Have you been playing Genshin? Have you been grinding Genshin?
और प्लेइंग स्टार रेल। वीकली बॉस का लिंक देखा? हाँ देखा मैंने, वीकली बॉस का लिंक देखा है। अरे ये किधर चला गया भाई? तू किधर है भाई? तू किधर है? नीचे है क्या? अरे ये तो वो है भाई, ये नहीं। ये किधर चला गया? इधर ही तो था। अच्छा अच्छा, शायद ये बड़ी होगा। हाँ उधर उस साइड पे हो। Take it easy. वीकली बॉस, हाँ वीकली बॉस का देखा मैंने। आज लाइव स्ट्रीम पे वीकली बॉस का दिखाएंगे। यहाँ पे होगा ना, आज लाइव स्ट्रीम पे दिखाएंगे वीकली बॉस पे। Just came back. My AR is 55 by the way. It is called new. How long have you been playing? When did you start playing Genshin? Kazuha. I don't know. I don't even have guarantee. I'll skip her for now. Alright, don't have guarantee. And any characters have you pulled in Star Realm? Any characters that you are looking forward to in the future? Actually, speaking of Star Rail, there is a live stream for 1.5 version 1.5 live stream today at 5:30 p.m. Same time as Genshin live stream. So both Genshin and Honkai live stream are going to be on the same time, which is very odd. It never happens like something very really odd. Whom I don't remember right now. Oh, it's fine. Gotcha. This I is mean, order. there are a lot of people Kazuha who plays Genshin and they take a break from their game, Rain outlines your fate. so and they do come back again. Rain So you know, it's just part of the game. You know, it's number. Number does not mean anything. Some people consider it as a thing in Genshin, you know. They judge by your AR, how much character you have, how much good artifact. It's just part of the game, you know. It's part of the game. But I do play Genshin. I'm building my Novelty team, but I'm not playing Star Wars. Oh yes, your Novelty, yes. I have not. I still wish I got would have gotten his weapon. But hopefully on his rerun domain, I will try to get his weapon and his consolation. He's really good, amazing player. I mean, amazing character. Might this way. Take it easy. Amazing character. Most broken character in the game right now. Things are about to get I will dicey. try to. I have him, but I Stabilize. don't have his consolation or either his weapon, which I honestly think he deserves. He deserves that. A character like that deserves his own signature weapon. So I'm using right now. I'm using prototype Amber. I'm not using any 5-star weapon on it. So I'm using prototype Amber, and he's still doing how much damage? Like 120k, 150k. Like without even his signature weapon, he's still doing very good damage, which is pretty shocking. How broken he is. I did the same. I took a break in between late July 22 and came back in January. Me gone. सब अच्छे बैनर कैरेक्टर आके चले गए. क्या लाके मेरा but I managed to grab नहीं था and I. कोई ना काजुआ भाई होता है. ब्रेक लेना चाहिए. मैं भी सोच रहा हूँ अगले साल ले लूँगा. जिनसे Fontaine 4.8 तक खेलूँगा. Quietly now. फिर उसके बाद मैं 1 साल बाद आऊँगा तो Witness the power of the rock. ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है.
क्योंकि इंसान एक गेम Gotcha. जिंदगी भर तो नहीं खेल पाएगा ना। Game's up. तो एक आपसे ब्रेक लेके आने का वो सही किया आपने। हाँ, कैरेक्टर्स तो आएंगे जाएंगे, वो तो होता ही रहेगा। क्योंकि नेटलैंड अगर मैं नहीं खेलता हूँ तो नेटलैंड में भी कैरेक्टर आएंगे, वो कैरेक्टर मेरे पे नहीं होंगे, तो उसका थोड़ा तो दुख मुख नहीं होगा मुझे। लेकिन हाँ, जब रीडर होगा तब मैं ले लूंगा, है ना। ब्रेक लेना पड़ता है, ब्रेक लेने से दिमाग फ्रेश, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है ना। चलो कोई ना, जो कैरेक्टर आपका मिस हुआ है वो बाद में आप रिटर्न पे निकाल लेना, है ना। वो कैरेक्टर्स तो आएंगे रिटर्न पे, कभी ना कभी तो आएंगे। और अगर जंक्शन में ट्रिपल बैनर आ जाते हैं तो आपका तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर्स के जो वो जो लंबा गैप होता है वो कम हो जाएगा काफी। अगर ऐसा होता है, सुनने में आ रहा है कि ट्रिपल बैनर आ सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ट्रिपल बैनर विल बी अनाउंस नेक्स्ट ईयर इन जनवरी। जंक्शन वाले ट्रिपल बैनर जनवरी को अनाउंस कर देंगे, मैं सुन रहा हूँ, मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं ऐसा होने वाला है। 20, अच्छा 20 लाइक्स हो जाए फिर देख लेंगे करण भाई आपका। थैंक यू सो मच माइकल भाई फॉर 10 months, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वेलकम इन माइकल भाई, थैंक यू सो मच फॉर renewing for 10 months, thank you so much for the support Michael भाई, very appreciated. Hope you are doing well today. How you been Michael भाई? Hope everything is going well on your end. Natlan Pyro Nation, nothing can scare me. Yelan and Villette exist. Are you sure about it? Are you sure about it? Today's live stream, Michael by today's live stream 4.2. Very excited. See her gameplay, Furina's gameplay. Today is the live stream version 4.2. Finally, they delayed it. Whoever has delayed it on 27th of October, I think. But today is finally the day. We'll be able to see some what's coming in the next patch. So looking forward to this. Oh my God, right. What the hell? Rain outlines your fate. Rain cut. Gather. Yeah. GB Novelty is so cute, goddamn. I know, right? It is quite cute. No, my sword. Things are about to get dicey. How much time left? Let's see. How much time left? 69 minutes left. Yeah, the chibi is very cute. Chibi is very cute. $69 minutes left. The fuck? Yeah, 69 minutes left for the live stream.
we'll have order. Solidify. Busted. Witness the power of the rock. So, there होगा ना? Yeah, 69 minutes left for the live stream domain. You know, there are 69 students in the class. Well, you want to see something hilarious? In Honkai started a live stream chat. Look at this. look, look what they're saying. 69. Let's go, 69. 69 is funny. Damn VA be like look all these people are typing. Please announce Silver Bull freedom. Please, I want modern quantum so bad. Look, these people are so desperate for Silver Bull freedom. What this guy is saying. I wondered if Elio will be playable and wondered if what is this guy is thinking too far ahead. Funny number time. Funny number time. Lol. We need nihility MC. Look at this. How many people are there? 5,000. 5,000. 66 minutes left. Oh. At least I'm not the only one who noticed it. Yeah. Yeah. You're not the only one. Quit it! And my Kuta has passed away. Gotcha. Here comes the catch. Yes, away. And he brought back to life. हेलो विनम भाई, कैसे हो? वेलकम। क्या हाल है? सब बढ़िया। हालचाल कैसा है आपको बताइए। Busted. Rain outlines your fate. Let me weave you a... Huh? See? बस मोरालेस मेरे पे कितना हो रहा है? मेरे पे 1 मिलियन के आसपास होंगे। 1.5 है अभी मेरे पे। मेरे पे भी मोरा नहीं थे। मैंने लेलाइंस वुलाइंस किए। लेलाइंस वुलाइंस करने के बाद मैं इतना तक आया हूँ। और वो जो इवेंट आया है, वो इवेंट से मिला है मुझको। मेरे पे भी मोरा नहीं थे। 1 महीने 2 हफ्ते पहले की बात कर, 2 या 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले की बात कर। मेरे पास एकदम भी मोरा नहीं था। मैंने फिर लेलाइन किया। लेलाइन वुलाइन करने के बाद फिर जाके कुछ मिला। आप भी वही करो, लेलाइन करो, लेलाइंस करो, फिर मोरा आराम से मिलेगा आप। ये कितना चाहिए? 4 8 बुक चाहिए मेरे को। ठीक, 8 बुक। 1 2 3 4 इधर। कल मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया, आज फुल बॉडी पेन हो रहा है।
आराम करो आज। थोड़ा आज आज एक दिन ऑफ रख दो, कल से चालू करना फिर से वर्कआउट। एक दिन ऑफ रहने से भी कुछ होगा नहीं। एक दिन ऑफ हफ्ते में आप मेरे हिसाब से 7 दिन पे अगर आप 5 बार करते हो वर्कआउट और 2 दिन ऑफ रखते हो तो दिक्कत नहीं होता। या हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो मिनिमम, 5 दिन तो मैक्सिमम करने से मतलब मेरा मानना है कि मैं पांच दिन ही सही होता है। कुछ कुछ लोग 7 दिन भी करते हैं, लेकिन अगर आपका बॉडी में दर्द हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो, मतलब एक दिन ऑफ रख दो वर्कआउट से, फिर कल से शुरू करना। बॉडी पे भी डिपेंड करता है, मतलब अगर बॉडी थोड़ा अगर फील कर रहा है प्रेशर तो ज्यादा उसको फोर्स देने की जरूरत नहीं है ना। तो कल से शुरू कर लेना। मोरा आते ही फिर एक कैरेक्टर आ जाता, मोरा गायब। वैसे हाइड्रोआर्कन आने वाली है, हाइड्रोआर्कन तो यहाँ पे आने वाली है ना। 5:30 बजे को लाइव स्ट्रीम होने वाली है, Remember for tea? हाइड्रोआर्कन आएगी। मेरी तो वैसे गारंटी है। मैंने रायत लिस्ट में कोशिश किया था, मुझको मिला नहीं, चीची मिल गया। बहुत कोशिश की, रायत लिस्ट मिला ही नहीं मेरे को। चाहिए था कैरेक्टर वो, लेकिन क्या ही करे। अब कोई ना, आर्कन तो निकल जाएगा। आर्कन निकल जाएगी तो उसमें उससे खुशी की बात और कोई नहीं होगी, है ना। भी गारंटी है, साथ ही साथ वो गारंटी भी है तो 50 लूज करके एक अच्छी बात हुई है कि मैं फुरीना निकल जाएगी। मेरा कॉलेज पीछे पड़ा है कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लूं, बट मन नहीं लेता चाहता। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से मेरे हिसाब से वो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से ना थोड़ा मतलब वो आपको फील नहीं आएगी मेरे हिसाब से। लेकिन जो वर्कआउट में करने का जो फील आता है वो अलग ही चीज होती है। ये मेरा मानना है। Toodaloo. मैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट मना ही करूंगा आपको, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है करने का तो मैं तो बोलूंगा आप उससे दूर ही रहना। There'll be an extra fee for that. एचएसआर लाइव स्ट्रीम कब है? एचएसआर लाइव स्ट्रीम जेंशन जब 5:30 बजे को है, 5:30 बजे को है एचएसआर का भी। जेंशन और एचएसआर का एक साथ है। जेंशन और एचएसआर का एक साथ है लाइव स्ट्रीम। साठ मिनट के बाद एचएसआर का लाइव स्ट्रीम होने वाला है और 60 मिनट के बाद जेंशन का भी होगा, तो दोनों एक साथ होने वाला है। तो काफी ऑड है, होता नहीं कभी। लॉग इन कर लेता हूं मैं, इनको ब्लैक कर दिया।
आईडी रिव्यू के लिए आया था 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? अच्छा, आपका चैट नहीं आया था शायद, मेरे को दिखा नहीं यार। भाई आजकल कोई स्ट्रीम देखने आता है क्या? भाई आजकल कोई स्ट्रीम डिजिटल लाइव स्ट्रीम करो। आपको है बॉस आ गया, आईडी रिव्यू के लिए आया था 5 मिनट पहले, बॉस आ गया। सर स्ट्रीम 5:40 को है जेंशन का। अच्छा 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद है ना। एक साथ कहाँ है? एचएसआर की पीएम दिख रहा है और जेंशन का 540 दिख रहा है। क्या बात कर, एक साथ नहीं है क्या? एचएसआर की 4:45 पीएम 800033843। कौन सा कैरेक्टर देखना है भाई? कैरेक्टर कौन सी देखनी है? आप कैरेक्टर मेंशन कर लीजिए, मैं देख लूंगा। Water comes in many flavors to the discerning palate. ये 4:55 को एचएसआर का 4:55 को है ना? अच्छा अच्छा, एचएसआर पहले है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा था दोनों एक साथ होंगे। और जेंसन का 5:40 को है। अच्छा, उनका का पहले शुरू हो जाएगा। रिव्यू ही कर दो तब तक, इतनी जल्द 20 लाइक कैसे करो 15 मिनट में? आप अपना कैरेक्टर बताइए भाई, आप अपना कैरेक्टर बताइए, मैं देख लूंगा आपको। एक ही कैरेक्टर देखूंगा आपका, एक ही कैरेक्टर देखूंगा, ठीक है? पूरा कैरेक्टर तो नहीं देख पाऊंगा, एक कैरेक्टर देख लूंगा भाई, है ना? एक कैरेक्टर आपका देख लेते कल। यस, मंडे को स्ट्रीम करूंगा, तो आप दिखा देना मेरे को, फिर आपका बाकी कैरेक्टर्स देख लेंगे। अभी के लिए एक ही देखूंगा, तीनों में से कोई एक देखूंगा, ठीक है? आपका एक तो देख लेता हूँ। तो आपका एक तो है लेवल 90, डिफेंस 2250 के आसपास है ना? वाह, क्या बात है, क्या बात है। एंड हॉर्न सिग्नेचर वेपन इटो का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पीस हर्स लगाया आपने। चलो आपका ये देख लेते हैं। फेदर 25 क्रिट डैमेज, 25 क्रिट डैमेज है इस पे। फ्लावर पे है, फ्लावर तो काफी अच्छा है आपका। 9 क्रिट रेट, 14 क्रिट डैमेज। सर्कुलेट तो आपकी बहुत अच्छी है, क्रिट रेट के साथ, वो भी 21.8 क्रिट डैमेज का रोल मिला है आपको, बहुत ही अच्छा। 21.8 सीवी का पीस, और जियो डैमेज बोनस वो भी ऑन सेट जियो गॉबलेट। किस्मत वाले हो, इतना अच्छा गॉबलेट जिसमें आपका पर डिफेंस परसेंटेज भी है, साथ ही साथ आपका क्रिट डैमेज भी है, और क्या चाहिए। और ऑफ पीस स्टैंड लगाया है आपने, डिफेंस। ये तो बहुत ही अच्छा पीस है, ये तो क्या ही बोलूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने का, बहुत अच्छा पीस है आपका। एक तो बिल्ड है भाई 78 क्रिट रेट, वो 240 क्रिट डैमेज विद 2247 डिफेंस। मस्त बिल्ड है भाई, एक तो आपका बिल्ड है ब्रदर, बहुत अच्छा बिल्ड बना है। ट्रिपल क्राउन, बहुत बढ़िया बिल्ड, मजा आ गया देख, बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा बना है ब्रदर। 4:55 को बोला है ना, अभी तो 4 बजे है, 55 मिनट बाकी है, 55 बाकी है ना। आपका डिलुक बाद में कर देंगे भाई, डिलुक आपका कर दूंगा मैं, मंडे को करूंगा लाइव, सोमवार को। तब आ जाना, मैं इसी टाइम पे आ जाना, और मैं आपका डिलुक कर दूंगा तब, ठीक है? आज इटो कर दिया है, मंडे को मैं आपका डिलुक कर दूंगा, ठीक है ब्रदर? 53 मिनट बाकी है ना? तो इसका बजेगा 5:40 को।
चलो तब तक मैं उसका भी देख लूंगा। हातिम से बात कर लेते हैं। इसको बस खाना ही चाहिए रे। प्रीमो देख, प्रीमो जेम्स दो भाई, प्रीमो जेम्स। चलो यहाँ से अचीवमेंट भी निकल गया। Reach the destination within time limit. ये तो इजी है भाई। उधर जान। I will have order. Silence! Let the mighty be humble. I cannot help but feel that you bringing me here is some sort of an assassination attempt.
कमीशन हो गया ना, कमीशन हो गया कि वहां पे चला जाऊंगा। Add Astra. Thank you for Add Astra. टाइम नहीं बचा है, 5:40 को है, 1 घंटा 40 मिनट के बाद है। और इसका जल्दी हो जाएगा, होंकाई स्टार रॉयल का और जेंशन का आज पता नहीं एक साथ ही है, एक साथ नहीं है, मतलब अलग अलग है, लेकिन थोड़ा टाइम थोड़ा आगे पीछे है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है समय का। इसका थोड़ा आगे हो जा रहा है, आधा घंटा पहले, 40 मिनट के पहले ये हो जा रहा है आगे, 40 मिनट के बाद जेंशन होगा। अजीब है, कभी होता नहीं है। आज उनका कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। देश में कभी करते नहीं है, शायद इमरजेंसी के लिए कर रहे होंगे, शायद एक दिन पे 2 निपटा देना चाहते हैं 2 गेम का, तो वही सीन लग रहा है मेरे को। Exactly. But none of them believed me. आज जस्टिस है ना, आज जस्टिस है, जस्टिस करना है, जस्टिस है। बुक्स 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 पुरीना का बुक्स। Nice and spicy. One with nature. Settle down. Wind strategy. Clouds high. The birds come. The tides beckon. Order guide you. Solidify. I will have order। It's the fire. आज वो कहीं करके ये कर लेता हूँ, है ना। Silence. Let the mighty be humble.
Stabilize. Into the wind. चलो ये भी हो गया। 3 अटेम्प्ट मिलेंगे शायद, 3 अटेम्प्ट है ना। डबल बोनस के 3 होते हैं जितना तक मुझे याद है। चलो 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया। एक काम करता हूँ मैं, रेजिन खरीद लेता हूँ जाके, टी पॉट में जाके, वहां से 60 मिल जाएंगे तो 4 कंटेंट्स बना सकता हूँ इसका। This realm is... एक मिनट, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? पैसे खत्म हो गए? If you ever पैसे वापस आ भी गए। यहाँ पे जाके इसका लेता हूँ। चलो ये स्टार्ट हो गया। काम करता हूँ मैं, इसलिए पकड़ लेता हूँ 4। तो हो गया यहाँ पे 3 और एक होगा शायद यहाँ पे था ना। चार हो गया ना, एक बना सकता हूँ मैं। 40 मिनट। Exactly. Time None of itself them believed is a me. science. This is order. Solidify. Goba, get them! Eat this! One with nature. Fallen leaves. Adorn my... The tides beckon. कंटेंट्स यूज कर लेता हूँ।
कंटिन्यू। Gather! The wind knows it. At the right hand, into the... Silence! Into the wind. As one with wind and cloud. Order guide you. Stabilize. Nice and spicy. Settle down. Be sanctified. Silence. Solidify. Time to go. Fallen leaves. Adorn my... Bow your head. I will have order. Stabilize. You're toast! Settle down. Let the mighty be humble. The wind knows it. Boba, get them! Gather! Clouds high. The birds call. Race you! At the right hand, into the fire! Silence. Stabilize. Nice and spicy! Wind strider. चलो बाकी कंटेंट्स बना लेता हूँ जाकर। जस्टिस कर लेता हूँ। काफी सारे जस्टिस कर लिया है फुरीना के लिए। जस्टिस टैलेंट बुक लगेगा फुरीना के लिए। वो प्रीफार्म करने से आपका थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा। लेवल 6 तक कर सकते हो। फुरीना मिलने के बाद लेवल 6 तक इजीली कर पाओगे लेवल अप। फिर उसके बाद तो वीकली बॉस का इंतजार करना पड़ेगा।
Settle down. Solidify. Fallen leaves, adorn my night. Booba, get them! Silence. Let the mighty be humble. Out of the frying pan, into the... Wind strike. Settle down. और 3 बाकी है। One with wind and cloud. Silence. Be sanctified. दो बाकी और। This is order. Stabilize. Out of the frying pan, into the... Into the wind. Solidify. One with nature. Clouds high. The birds come. Nice and spicy. Settle down. अरे उल्टा जा रहा हूँ। चलो एक और बाकी है। Order guide you. Stabilize. Out of the frying pan, into the fire. Let the mighty be humble. Bow your head. Fallen leaves, adorn my... Nice and spicy. Be sanctified. An oversight on my part. This is order. Solidify. चलो बहुत सारे जस्टिस कर लिया आज।
28 minutes left. कितना टाइम लगेगा आते हैं? 28 मिनट। ऐसे को भाई ये तो स्टार पहले शुरू हो रहा है, फिर इसके बाद जेंशन शुरू होगा 40 मिनट बाद, इसके ठीक 40 मिनट बाद ये शुरू होगा। ये 5:40 को है। हाँ, आज फुरीना का बहुत सारा बुक कर लिया है। जस्टिस वाला जितना भी बुक लगता है फुरीना को सारा कर लिया है मैंने आज। फुरीना के लिए लगभग प्रीफार्म रेडी है मेरे पे, सब कुछ लगभग रेडी हो चुका है। अभी बस उसका वीकली बॉस और उसका जो एक्सटेंशन लगता है वो बस ग्राइंड करनी पड़ेगी, बाकी का तो लगभग है मेरे पे। बाकी का मेरे पे है बस। हाँ, उसका वीकली बॉस का वो चाहिए होगा, हफ्ते में थोड़ा टाइम लगेगा उसको मारने पे, तो हाँ वही समय लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और तो बाकी तो सब ठीक ही है। बेस्ट पूरा डे ऑफ द गिल्टी, ये शायद फाइनल एक्ट होगा, लास्ट चैप्टर। चौबीस मिनट। There'll be an extra fee for that. Melusines are beautiful creatures. Mhm. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. Cause them no harm. 24 मिनट। There'll be an extra fee for that. Exactly.
Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I'll think about it. There'll be an extra fee. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Exactly, but none of them believed me. I'll think about it. There'll be an extra fee for that. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. बीस मिनट बाकी है उनका ही क्या Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. There'll be an extra fee for that. I'll think about it. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. There'll be an extra fee for that. 19 मिनट I'll think about it. There'll be an extra fee for that. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. 18 मिनट Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties.
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. Cause them no 17 minute. harm. There'll be an extra fee for that. Water comes in many 16 flavors minute. to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. There'll be an extra fee for that. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. मेरा नोवेलेटर रिव्यू करोगे जब तक? हाँ कर लूंगा यार, बताओ आपका, There'll be an extra fee for that. बता आपका यूआईडी बता दीजिए बिरम भाई, तब तक आपका देख लेता हूँ नोवेलेटर। यूआईडी डाल दीजिए आप अपना, नोवेलेटर देख लेंगे आपका। आठ 5 8 6 नोवेलेटर, अरे गलती से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, कोई ना। सर्च अच्छा ठीक है। 32 क्रिट रेट, 310 क्रिट डैमेज, टॉम ऑफ द इटर्नल फ्लो। ओ भाई साहब, वेपन भी मिल गया आप, क्या बात। डुबलेटेड लेवल 90 की, बहुत बढ़िया, 38-40,000 के आसपास एचपी, और आपका वेपन तो बहुत ही अच्छा है, सिग्नेचर वेपन है डुबलेटेड के पास आपका। 32 क्रिट रेट, 310 क्रिट डैमेज के साथ आर्टिफैक्ट्स देख लेते हैं। 4 पीस हंटर लगाया आपने, बहुत बढ़िया। ओह 18.7 क्रिट डैमेज विथ क्रिट रेट 10.1, और वो भी एचपी परसेंटेज के साथ, क्या बात। फ्लावर भी काफी अच्छा है आपका, यहाँ पे अगर एचपी परसेंटेज आ जाता अटैक परसेंटेज के, अटैक परसेंटेज के अगर आप मान लो यहाँ पे एचपी होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका बहुत अच्छा है। ये पीस थोड़ा सा डिफेंस में रोल भी चला गया होगा, ऊपर 1-2 रोल गया होगा डिफेंस में शायद, यहाँ पे ये एक ही रोल गया होगा। ये भविष्य में चेंज कर सकते हो, लेकिन ये चल जाएगा, अभी के लिए चल जाएगा, ये थोड़ा और भी बदल सकते हो। वेपन पहले पुल करता, जिसका मिलता उसका निकाल लेता। ये अच्छा, ये तो काफी अच्छा है कि यहाँ पे आपका एचपी परसेंटेज है 14, तो ये काफी अच्छा है आपका, और एचपी गॉबलेट लगा है, ये तो बहुत ही अच्छा पीस है।
क्रिट डैमेज 26 26.4 और यहाँ पे 6.5 6.6 क्रिट रेट, काफी बढ़िया। एचपी का अच्छा इसका ये और भी बेहतर बना सकते हो। 14.80 सीवी है, अगर ये ऑनसेट मिलता है आपको इससे भी अच्छा तो लगा देना, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो स्टैंड को थोड़ा बेटर बना सकते हो आप, लेकिन ये बहुत डिसेंट है, ठीक है चल जाएगा अभी के लिए। 14.8 खराब नहीं होता है, लेकिन और थोड़ा अगर आपको ज्यादा रोल मिलता तो मतलब मजा आ जाता, लेकिन कोई ना, अभी जो है काफी ठीक है। तो स्टैंड को आप बेटर बना सकते हो आप मैनम भाई। आपका गॉबलेट तो काफी अच्छा है, एचपी गॉबलेट। आपका क्रिट डैमेज सर्कुलेट इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपका 14% एचपी परसेंटेज 14 है आपका। जो नुबलेटर को एचपी परसेंटेज चाहिए होता है, तो वो ये सर्कुलेट में बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छा है ये। चाहे इसमें क्रिट रेट ना भी हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन स्टैट तो वैसे भी एक क्रिट रेट है ना, और इसे क्रिट डैमेज है ना, तो ठीक है। तो क्रिट रेट चाहिए नहीं, नुबलेटर को उतना क्रिट रेट चाहिए नहीं होता, 30 क्रिट रेट, और यहाँ से 100 से तो 4 पीस का मिल जा रहा है। तो हाँ, तो फ्लावर का एक बार देख लेना, अगर फ्लावर का अगर इससे ये ठीक है, लेकिन और इससे भी बेहतर बना सकते हो आप। इससे भी बेहतर फ्लावर अगर मिलता है तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये ठीक है। फ्लावर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एचपी परसेंटेज है आपका। यहाँ पे अगर आपको फ्लावर पे अगर एचपी परसेंटेज मिलता है विद सीआरसीडी, जैसे आपके फेदर के जैसा, तो मतलब सोने पे सुहागा है ना। लेकिन ठीक है, इनोवेटर आपका काफी अच्छा बिल्ड है। थोड़ा इधर उधर थोड़ा इम्प्रूवमेंट, जैसे कि सैंड सो चाहे थोड़ा सा फ्लावर हो, लेकिन बाकी सारे आपके काफी जॉट है। बहुत अच्छा एकदम बनाया आपने मैडम भाई, और मजा आ गया। वेपन तो काश मेरे पास भी ये होता, लेकिन है नहीं। कोई ना, अगली बार ले लूंगा मैं रीरन पे। अच्छा, आपने क्राउन कर दिया ना नॉर्मल अटैक को क्राउन कर दिया, ई को 8 किया, इसको 9 किया, ठीक है, काफी बढ़िया है, मस्त बनाया है बुलेट आप। और सीआर के लिए ये लगाया, वरना एक 30 सीडी वाला विथ एचपी। अच्छा, नौ मिनट बचे हैं, 9 मिनट बचे हैं। सेवेंटी के चार्ज दे देता है, अरे भाई साहब 70 के बहुत बढ़िया। नोवेलेटर बहुत ब्रोकन कैरेक्टर है यार, क्या ही बताओ। बहुत ब्रोकन कैरेक्टर है नोवेलेट। इसका C1 तो बहुत ही अच्छा है, C1 बहुत अच्छा है। आठ मिनट बचा है।
मैंने इस बार अबिस में सेकंड हाफ नुबलेटर सोलो से करा है। ओ भाई नुबलेटर सोलो बढ़िया। नुबलेटर सोलो तो कैरी कर लेता है, बाकी के टीममेट की जरूरत नहीं है। वो अकेले ही काफी है, वो अकेले ही काफी है। अब बस आप वो पानी वाला बोचार स्पैम करते रहो, आपका काम हो गया। भाई कैरेक्टर हो तो ऐसा भाई, मतलब बहुत पावर क्रिप्ट कैरेक्टर बनाया है नोबुलेटे को। ये मेरा मेरा मानना है कि इसको बहुत पावर क्रिप्ट कैरेक्टर बनाया। और वैसे गेम के लिए अच्छी चीज है, डीपीएस को पावर क्रिप्ट बनाया है। बाकी सारे डीपीएस को नोबुलेटे इजीली पावर क्रिप्ट लगभग कर ही देता है। अभी सवाल है कि क्या नोबुलेटे से बेहतर और पावर क्रिप्ट कैरेक्टर बना सकते हैं होएवर्स? सकते हैं, लेकिन वो तो समय आने पे पता चलेगा। नोवेलेटे को कोई अगर पीछा, मुझे लगता नहीं अभी अभी 1-2 साल के लिए नोवेलेटे को कोई भी पीछा छोड़ पाएगा। लेकिन होएवर्स तो का कुछ पता नहीं है, कौन सा ब्रोकन कैरेक्टर निकाल देंगे, फिर वो नोवेलेटे से आगे भी जा सकता है। उतना आगे नहीं जाएगा, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नोवेलेटे का किट बहुत अच्छा है। उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है कैरेक्टर। फुरीना आते ही 100 के, फुरीना से तो उसको बहुत बफ मिलने वाला है बेनम भाई। फुरीना उसकी बेस्ट सपोर्ट है, नोबुलेटे की बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर फुरीना ही है, और कोई है नहीं अभी के लिए। फुरीना के बाद तो इजीली आपका दे देगा 100 के, इजीली दे देगा। मेरा मैक्स जाता है शायद 75-80, 75-80 मेरा मैक्स जाता है नॉर्मल में। कभी कभार 1 लाख जाता है, मतलब वो बहुत रेयरली होता है, मतलब बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब मेरा कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि फुरीना आने के बाद 1 लाख काफी नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बार बार मारता ही रहेगा। तो फुरीना का जो बफ मिलेगा ना, तो उससे नोवेलिटी 1 लाख क्या, 1 लाख से ज्यादा भी इजिली, मतलब 1 लाख के ऊपर कंसिस्टेंट डैमेज मारेगा। उस 1 लाख के 2 लाख भी मार सकता है, उससे ज्यादा भी मार सकता है, क्योंकि फुरीना बहुत बफ करने वाली है नोवेलिटी को। देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो 5:40 को है, 4 मिनट बचा है बस, 4 मिनट बचा है। होगा स्टारर चार्ज पे हाँ, चार्ज पे मेरा नहीं, मेरा चार्ज पे मारता है 50,000, चार्ज पे मेरा मारता है 55-60, अर्ट पे मारता है 80, अर्ट में मेरा 80, कभी कभी 88 भी मार देता है, कभी कभी 85 भी मार देता है। चार्ज पे मेरा 40, 47, 50, कभी कभार 60, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब 40-50,000 के आसपास नॉर्मल अटैक तो रहता ही है चार्ज पे, मतलब चार्ज पे रहता ही है। फिर अल्ट का तो अलग सा डैमेज आता है मेरा, वो 80 के ऊपर हमेशा जाता है।
C1 होता तो 150 शायद चला जाए 4 से वो थोड़ी ना C1। अच्छा इसका C1 है ना। अच्छा C1 when Nobunaga takes the field he will obtain 1 stack of past draconic glories from the passive. Additionally, his interruption resistance will be increased while using the charge attack empowerment. चार्ज अटैक से ये करने से कोई भी एनिमी आए इस पे कोई डैमेज नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ इसका C1 निकालना पड़ेगा वेनम भाई, रीजन पे C1 निकालना पड़ेगा। एक मिनट बचा है, मैं अपना हेडफोन लगा देता हूँ। बस क्या है ना, हेडफोन लगा दिया मैंने अपना। चलो टेंशन का 5:40 को है ना। चलो होंगाई का शुरू हो गया ना। चलो होंगाई के शुरू। एक स्टैक पहले से देता है उससे मतलब 2 हाइड्रो यूज कर सकते हो फिर भी स्टैक मैक्स हो जाएगा। अच्छा तो मतलब नोबुलेटर और फुरिना यूज कर लेते तो स्टैक तो फुल ही हो जाएगा ना बेसिकली। अभी तो मैं सिंगल ही हाइड्रो यूज कर रहा हूँ तो मेरा स्टैक थोड़ा टाइम लगता है फुल होने पे, लेकिन अब जाके फुरिना आने वाली है, डबल हाइड्रो होने वाले टीम में, तो स्टैक तो हमेशा ही रहेंगे फुल। एक स्टैक पहले से देता है तो मतलब 2 हाइड्रो यूज कर सकते हो फिर भी मैक्स स्टैक हो जाएगा। सही है यार। फुरिना आने पे ना नोबुलेटर का डैमेज इतना इंक्रीज होने वाला है गनम भाई, वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो नंबर दिखेंगे ना वो खतरनाक होने वाले, बस यही बोलने वाला हूँ मैं। बहुत बढ़िया होने वाला है, नोबुलेटर को बहुत पक मिलेगा, मजा आएगा। 5:40 को है ना ये, तब तक ये देख लेते हैं। मैं सेव कर रहा था वैसे फुरिना के लिए, नोबुलेटर ने बचा दिया। अब तक 50 सेव कर पाया हो, बस 50 विशेष मिल जाएगा, फुरिना मिल जाएगी। बहुत टाइम है आपके पास, वैसे भी नया एरिया आने वाला है मैडम भाई, नया एरिया आने वाला है तो तकलीफ नहीं होने वाली है। नया एरिया जो मैप आएगा उससे भी मतलब 2200 स्टेलर जेट तो मिल जाएगा, 2200-3000 के आसपास तो मिल जाएंगे। फिर आर्कॉन क्वेस्ट आएगा एक्ट 5 फाइनल पार्ट, उससे आप कंप्लीट करोगे तो उससे बुक से मिल जाएगा 2 विशोर। फुरिना तो निकल ही जाएगी तो उस पर
लास्ट डे तक ट्राई करना, मिल जाए। शुरू करो भाई, शुरू करो। ग्राइंड है, होगा पक्का है। ग्राइंड तो करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। अभी फाउंटेन के आर्गन क्वेस्ट नहीं करना है, वो करता हूँ कल से। कौन सा कर रहे हो? एक्ट 1 कर रहे हो क्या? कौन सा वाला? एक्ट 3 वाला? क्योंकि 5 पार्ट है ना, 1 2 3 4 फिर 5। कौन सा वाला कर रहे हो आप? जेल वाला कर रहे हो क्या? बना जहां से चाइल्ड जेल पे चला जाता है अंदर, वो वाला कर रहे हो आप? वो वाला काफी लंबा है वैसे, 1-2 घंटा लग जाएगा, बहुत लंबा है वो। स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी। अच्छा, स्टार्ट नहीं किया है, कल से कर लेना। ओंकाई का आ गया। The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. ये क्या है भाई? Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madam Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. World 8 आ रहा है। Hello? Hello? क्या हो गया? भूत आ गया क्या? Hello, my name is Hua. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity, with evil spirits wreaking havoc across multiple locations. The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Sidrilla? Oh, trailer. Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty,
I will have to show you in a way that only a knight can. The beauty is eternal. ये कौन है? आइडेंटिटी है क्या? What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. Oh, no, stop it. I think I just found the move. Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Papa. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. January 9, 7. JB9B. JB9B. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Interastral Peace Media's Haunted Xianzhou special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Xianzhou's weirdest and most wonderful. Hi, everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbert's Haunted Xianzhou special program. JB9B. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Xianzhou is constantly roaming the universe. And the universe is filled with unknown. It should come as a surprise that the Luofu has had its fair share of strange encounters. Genshin का live नहीं आया अभी तक. ये खत्म होने के बाद आएगा. मतलब शुरू होने वाला है. Mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in
dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me. The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtural Garden. Fixtural Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Luofu. Heliobi are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Xianzhou's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtural Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Xianzhou's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtural Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Xianzhou fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Ugh, who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? उनका स्टार में अभी भूतों का ढूंढने का नौकरी मिल रहा है. Well, you स्टार better में hope so. भूत ढूंढना क्या है? Speaking of which, in the brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the अरे hunting. भाई गेमप्ले दिखा भाई गेमप्ले दिखा पक बंद कर for chasing down Heliobi, बंद कर ये purging पंछी evil, resolving crises, and protecting the Xianzhou. A Foxian Tale of the Haunted is divided into 5 chapters and starts off with a ghost hunting squad facing an unusual danger. Once this chapter is complete, the story continues to unfold. Twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Guinifin, Trailblazers will also be facing Fixtural Garden dangers in both Luofu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool! Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtural Exploration, Trailblazers can jointly manage Guinifin socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. I can't wait! We're gonna get the whole Xianzhou talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material! We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Guinifin, there's always room for creative talents. Oh, new limited. I don't want to new limited platform. I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. What's cool? I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials.
Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Guinaifan's generosity, woo! Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixtural Garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. Huohua is a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the Ten Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Huohua is essentially a magnet for evil. Something that comes in super handy for the Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huohua's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the Xianzhou. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huohua was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huohua under their wing. Ah, I get it. So Huohua is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huohua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the 10 Lords? Oh, Huohua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia, to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huohua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huohua's basic attack, Banner's Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huohua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender?
Huohua's ultimate, Tail Spiritual Domination, can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a Heliobus looks like. No wonder it took the 10 Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huohua has a few special talents. After using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's Yeah, gonna kick butt. That's not all. Huohua's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves, Huohua. Still not getting judge vibes, though. Hey, easy on the trainee. Of course, when you're dealing with Helioba, the more judges, the better. That's why the 10 Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. Hanya. उसका कैरेक्टर लग रहा है. Hanya is a netherworld judge of the 10 Lords Commission. She's a physical type character, following the path of harmony. Ah, I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated to the work of the 10 Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. In order to determine their sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huohua, but those sound like credentials. Hey, enough with the Huohua bullying. But speaking of credentials, it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? I'll get my coat. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skill, Samsara Lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going gets tough, Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Lords Decree, all shall obey, can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new Stagnant Shadow, Shape of Perdition, will appear within the Fixtural Garden map on the Xianzhou Lafu. Complete the challenge to obtain new physical ascension materials. Within the same map, we'll also be welcoming Cavern of Corrosion, Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 brand new Cavern relics. Prisoner in deep confinement, and Grand Duke incinerated to ashes. Woo! Well, that just about brings us to the final sections of our Haunted Xianzhou special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful Foxian spirits knocking on your door at midnight? That kind of thing. I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates.
Thanks again for watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. Hey, you there! Sick and tired of the daily grind? Had enough of running errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a sense of pride? Then do we have an opportunity for you? The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter I Am the Ultimate Fighter to register your name. Could you be Boulder Town's new fighting star? A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in your hands. Madam Herda of the Genius Society is about to launch unlimited beta testing for the newly developed Simulated Universe World 8. Participants will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to participate in this offline confidential beta test, please head to the most mysterious place in the universe, Herda's office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagoni Land of the Dreams and Firmament Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to begin. It's the version you know and love. Let the computer do the hard work for 3 minutes and get your hands on double rewards together with Argenti. One must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo, but we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti! Argenti. Argenti is a physical type character following the path of erudition. As a devoted admirer of Adrilla the Beauty, Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty
is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Idrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, Fleeting Fragrance, can deal physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms, can deal physical damage to all enemies. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Idrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes Merit Bestowed in My Garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or, to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly! Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kinda handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. That Argenti fans are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because 10 minutes? Pom-Pom's always cleaning up after us? It's because the train stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement. 9 minutes left. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the Drilla's blessing, let's move straight on to the version 1.5 warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character event warp, Bloom and Gloom, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Wah-Wah. Yours, my favorite scaredy cat trainee judge. During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming 2 character event warps. In Thorns of Scented Crown, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Our knight in shining armor. Meanwhile, in Silver contrast, Wolf, Silver Wolf, Silver Wolf, Silver Wolf. will be joining the warp.
Not to mention the 4-star character Hanya, who will be appearing in both the aforementioned second phase character Finally. warps. Ah, long time no see, Silverwolf. I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before a gate, An instance will before enter a the gate. light cone event Before a world. gate. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone, Incessant Rain, will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump, and here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice lines. Voice line. Promoted again? Is that good or bad? Ah, is that Huohuo's ascension line? Ah, so cute! Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Oh, nice. Such a neat idea. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. Oh, nice. First Forgotten up, Hall. In Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or defeat. Your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. Oh, nice, nice. No need for manual selection. Now that's my kind of update. Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. चार मिनट 26 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं बचा है 6B 6B 9B FP care 58 Q3T कॉपी कर लेता हूँ Hey. All right, 10 minutes, 45 seconds left. Then finally, finally. Finally हो गया इतना इंतजार करवाया हाँ
ऐसी को भी मिला भाई ना इंतजार करवाया व्यूअर्स ने फुरीना 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 इस मतलब ये अपडेट से फुरीना के बारे में कुछ नहीं है इस अपडेट में बस फुरीना 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 है और इस अपडेट में कुछ भी नहीं है फुरीना का जलवा देखने को मिलेगा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा ट्रेलर आएगा वर्जन का ट्रेलर आएगा एक्ट 5 का ट्रेलर आएगा स्टोरी क्वेस्ट आर्कॉन क्वेस्ट का लास्ट फिनाले आएगा अभी बहुत इंतजार करवाया सालों ने बहुत इंतजार करवाया बहुत फाइनली वक्त आ गया है उस घड़ी का जिस पर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे है ना That the best part of Fontaine will end there. हाँ कहानी तो एक ना एक दिन खत्म होने को ही है यहीं से जहां से शुरू हुआ था वो तो खत्म होना ही है क्या ही कर सकते हैं यही है यही तो चलता रहता है स्टोरी में चलो 1 मिनट 30 सेकंड बचा है तो बुधवार को आने वाला है ना अपडेट बिला भाई बुधवार को आएगा ना अपडेट बुधवार को आएगा तो बुधवार सुबह स्ट्रीम करने लग जाऊंगा सुबह मैं सोमवार को भी करूंगा बुधवार को तो सुबह करूंगा पुलिंग करूंगा पुरीना पुलिंग करूंगा वेपन तो नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन पुरीना निकल जाएगी यार इतना सर्दी हुआ है मेरा बस जुकाम क्या ही बनूंगा ये सूंघ के मैं थक गया हूँ पूरा अरे यार जल्दी करो तेईस सेकंड 22 21 20 19 18 17 सब सीजन फुरीना नो R1 सेम भाई सेम मिला भाई कहाँ से प्रीमोस कहाँ से लाए बताओ हाँ ये बात अलग है अगर अर्ली निकल जाता है तो वो बात अलग है लेकिन अर्ली नहीं निकलता है तो अब कुछ नहीं कर सकते फुरीना का वेपन नेक्स्ट टाइम निकालना पड़ेगा Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Furina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Furina. Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there English something stream finally bhai Chinese mein nahi hai If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. Trailer. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro Archive to be punished via the death sentence. What? Death sentence? क्या हो गया अरे?
You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. ये Chinese में तो कुछ समझ नहीं आता हाँ यार. Gods be Finally English में कर दिया. अच्छी बात है. What's done is done. Just trust in me. Your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself Finally to or Furina. not. ये देखो. Furina आ गई. The show begins. Shower me with praise. Best support character in the game Let my name echo in song. after Kazuha. Off-field character. What's the news? Download. Not interested. नहीं चाहिए मुझको. नहीं करना मुझको फोटो नहीं खिंचवाना. फोटो मुझको नहीं खिंचवाना भाई. हट जा. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water. Furina, death Strange all the sentence. same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. अरे नविया को क्या हो गया? पानी के नीचे गिर गई क्या? What has been prophesized will be fulfilled. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. And why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right. The trial of the Hydro Archon. Seem to remember the floor will now This begin. trial is... Yep. I now understand the true purpose behind this position. ये क्या हो क्या रहा है भाई? अरे ड्राइव You are a devious one, Fusalo. अरे कौन है हाइड्रो आर्कन वो तो बताओ. वो लेते हैं Furina है भाई. What should I do? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे The साइड का prophecy बोला that you've गया. been fretting over should now be in full swing. ये कौन है? अरे ये कौन थी भाई? ये लड़की कौन थी? अरे ये I suppose this would also ये real be Hydro Archon the है क्या? justice that belongs to you. Is that real Hydro Archon? Oh ये Eventually end in a अच्छा ये real magnificent Hydro Archon and है. dramatic trial. दो लड़की जो दिखाई अभी. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. भाई साहब ये रियल Hydro Archon थी वो जो व्हाइट वाली. समझ गया. ये सीन है. कोड आ गया. कोड. VN97 क्या है? JNF 240. हो गया. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Furina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine.
I'm sure many of you already consider Novelette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Furina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Furina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, इसका चिबी कितना क्यूट है यार. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Furina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Archon Quest Chapter 4. Ooh, interesting. Chapter 4 आ गया है. No, I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like. मैंने main account पे Chapter 2 तक किया, Chapter 3 नहीं किया है. कल से शुरू करना पड़ेगा मेरे को भी. Maybe also Novelette is keeping an eye on things. शुरू कर दो कल से. Behind the scenes, maybe. Archon Quest. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit. ज़्यादा दिन बचा नहीं, बुधवार को अपडेट है ना, खत्म हो जाएगा. 1-2 दिन लगेंगे. Minimum 2 दिन लगेंगे खत्म करने को. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the and this is possibly the greatest crisis we've faced earphone लगा के. Definitely. In version 4.1, situation involving the rising Novelette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede. लेकिन दूसरी बार जब करता हूँ तो दूसरे अकाउंट पे तो म्यूट करके खेलता हूँ मैं. Though we probably can't dismiss the assistance provided by the knave either. अब तो पीसी भी नहीं है, मोबाइल पे सब कुछ करना पड़ेगा. It seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest. यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है. Sounds good. देना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन पता नहीं यार उन लोगों का. Have we forgotten? मुझे लगता है कि वो लोग चाहते नहीं कि स्टोरी को स्किप करें, तो इसलिए उन्होंने दिया नहीं होगा. You mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress Keep for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. वैसे Fontaine की स्टोरी काफी अच्छी है. We saw Child appear at the end of the last version's Archon quest. तो मेरे से मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा. Fontaine का स्टोरी बहुत ही अच्छा है. बहुत ही अच्छा है. मुझे काफी अच्छा लगा. About Furina. She's confronted with because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Furina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Furina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all. Amber Lee Connors, English voice actor, Japanese. Furina. I'm Minase on a very tight Inori. schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Minase Inori.
Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's like amazing. you'd expect for a Hydra Archon. Prophecy हम देख लेंगे. Oh. तुम डायना का quotes दिखाओ. Okay, you know what? Yeah, It seems as if she's always straight to dressed the like she's point. about to attend a performance. Yes, you know what I सही है. mean? Yes. सही है That's आपका ही. Fontaine's biggest celebrity Straight for to the you. point, भाई. दिखाओ And यार. Speaking of drip, कुछ let's तो take दिखाओ. a look at her Quotes combat दिखाओ. abilities. और second generation code दिखाओ. Gameplay दिखाओ. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Strike a pose. Let the world come alive! Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so अरे compliment the देना बंद creatures कर that भाई. Furina summons, they look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. कितना बार cute बोलेगी भाई. Oh my 50 बार बोल gosh, चुकी है no, cute the cute. octopus is even wearing a hat. यार क्या What a यार. distinguished नहीं तो little उसे solve करनी gentleman. होगी. लग नहीं रहा हो correction, पाएगी fast Sarah. up They're a तक. bit different from Fontamer aberrants. I would know. To my देखो knowledge, क्या these होता है, creatures are Furina's जितना कर सकते हो उतना तक honored करो. guests. क्या They पता even help manage her daily जल्दी में निकल affairs. जाए. Yes. कोशिश करते रहो last day तक. Exactly. बनम भाई. So, Furina often निकलता है तो brings बढ़िया, guests to वरना the रीजन tea पे निकाल लेना. party, which is known as वो सभी Salon रीजन इसका आ जाएगा Solitaire. जल्दी 4.6 में आ And जाएगा. Those creatures are actually special नहीं था कभी तो वही guests of the सीन था ना. Salon 4.6 में भी आ गई थी. And she even gave each member a name. Oh my gosh. मतलब 3.6 में आई थी ना. So नहीं you've था. got the maid, 3.2 के Mademoiselle बाद. Crabaletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And भाई ये लोग ना the रिडल में बहुत बात करते हैं यार. conferencier, ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे Usher. एकदम. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Furina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Furina even makes him spew bubbles in her idol animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is बस just कर itching भाई. to know more about the मेरी skills माँ shown in बस that कर. clip. कितना So, बोले Amber, क्या डालो बोल why don't you कितना take it बोले away? कि Tell us क्यों. everything. Yes, भाई you पागल got कर it. दिया मुझको. मेरा दिमाग भर गया. So, Furina is a Gameplay Hydro दिखाओ. sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Cheval Moran, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these Salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. Name It's super ऐसा cool. रखो कि After Furina नाम uses लेने her में 1 charged मिनट चला attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the बहुत सही बोला Singer आपने of सोनू भाई. Many Waters to provide इतना healing to कठिन nearby नाम है ना party भाई. members. 1 मिनट लग जाते हैं. Yes. The Pronounce करने में. summons created by Furina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents.
And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare points. Oh, novelty के लिए अच्छा support है ये. That's my trumpet. बहुत अच्छा support है novelty के लिए. So, Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare. अच्छा heal भी करती है भाई. Wow, it seems like this fighting style really suits heal भी करती है Very क्या? showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. Heal, That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deep water aberrants, Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained इसका in the elemental skill में heal भी करता है इसका. Wow, you can say that. या passive है इसका पता नहीं क्या. लग तो रहा है passive है इसका. Passive heal भी करती है. Secrets lurking in the depths. भाई साहब. Oh, it's the secrets lurking. गया novelty का certified buffer आ गया broken. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. इसके पुतले heal भी करते हैं. Hey, I actually saw that Furina's outfit changes whenever पानी she पे switches between चल भी lock सकती है. Yeah, good eye. कोकोमी का दिन गया. It does change. मेरे कोकोमी के दिन गए भाई. The time of a celebrity, I suppose. Yes. So if you want to learn more about Furina, story then be sure quest. to accompany her on her story quest. Yes. The Animula Kuraji. Amazing. Okay. So next up, we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. बड़ी खिलाड़ी निकली. Yay! Adorable. So cute. अरे यार, We've इसका known game. Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. इस पे 5 मिनट बर्बाद जाएगा देखना. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents. नीलू को buff मिलेगा आपका वेनम भाई. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. भाई अच्छी खासी इन करती है. 3,000 3,500 के आसपास इन कर रही है. मैंने कुछ नंबर देखा अभी. भाई बहुत अच्छी इन करती है. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. एक बफर है, एक हीलर. अच्छा. Say cheese. ये कौन है? चार्लोट है क्या? चरस. ज़रूर भाई चरस बोल दो. चरस. Breaking news. Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles. आर्टिफैक्ट सेट आएगा जो एक्स्ट्रा हील को बना देगा. अच्छा नया वाला आएगा क्या वो? Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Furina पे गोल्डन ट्रूप लगाऊंगा वो जो 4 पीस. I didn't know you could use them as a जिससे weapon. 80% का elemental skill damage देगा ना वो लगाऊंगा. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera.
During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. ये फोटो खींचते Holding रहती है। Charlotte's elemental Nice. skill strengthens थोड़ा these इधर- effects थोड़ा तो and अच्छा applies पोस्टर निकाला focused है। impression to opponents शुक्र instead. माना डोरी Now, जैसी her नहीं है। elemental burst creates a news डोरी flash जैसी field कट्टी that पोस्टर नहीं है। continuously restores HP to ठीक party है, members चलेगा। within its range. हाँ, new Monsieur setup Verite, था। he's also going to तू join in खींच and मैं intermittently रिपोर्टो, attack तू opponents खींच during the मैं duration of the रिपोर्टो ability. किया। As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. शुक्र When भाई paired with भगवान का लाख Fontaine लाख शुक्र characters, ये Charlotte डोरी जैसी receives a नहीं healing बनाई है। bonus. When paired डोरी with जैसी टट्टी नहीं non-Fontaine बनाई है भाई। characters, she बहुत बहुत receives शुक्रिया। cryo damage ओएवर्स bonus. वाले Now कुछ that आप is इज्जत दे not रहे हो all. 4 स्टार There is कैरेक्टर more. के। During the 4 स्टार 4.2 कैरेक्टर special को अच्छा event, खासा travelers इंटरेस्टिंग can बना रहे complete हो। a quest बहुत to अच्छी receive a बात है। special gadget Keep it called up, बहुत the zoom शुक्रिया। lens. डोरी जैसा When टट्टी कैरेक्टर Charlotte मत बनाया करो। activates the zoom देखो, lens, it गेम will पे। trigger her passive talent called थोड़ा first अपने person गलतियों से सीख रहे हैं ओएवर्स। When you hold her elemental skill, the gadget will पिछले cause you गलतियों to से सीख enter रहे हैं। photo mode instead. चलो अच्छी बात। That is so cool. Yep. That is super rad, and you know, I have a feeling some new super set. cool pictures are यूनिक gonna गेम ना come out of इसे that. गेम काफी अच्छा। Oh yeah. We are going to provide Photo more खींचते हैं। information about the zoom lens and how to use it Cryo लग during रही the है, event cryo। overview portion. So, Furina and Charlotte will both be featured in version 4.2 Event Wishes. Ooh. In the first half of version 4.2, क्या we'll have गया? Event Wishes Weapon showcasing banner Furina and Baiju. penalty। During this time, Charlotte will also receive a huge drop raid boost. Huge boost. The penalty is here with Furina. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, Oh, new will be weapon. featured in the weapon event banner. Splendor of tranquil water। Sword. ओह, कितने sexy weapon। And in मुझको दे the दो। second half of version 4.2, we'll have Not reruns interested, for मुझे Sino नहीं चाहिए। and Ayato. आया तो है मेरे पास ऑलरेडी Let's take साइनो a look at what साइनो नहीं other चाहिए मुझे। information we can learn from Furina's itinerary. Sheesh। It looks like she's investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange Oh, ये rumblings क्या have है? been heard in the depths New of weekly boss। Fontaine's waters. Dun, dun, dun. टाइम तो मिले क्या? Oh, it's बाइजू here भाई already? बाइजू क्यों दिया भाई? Oh. Look at that. Oh. यार कुछ और दे देते भाई। Well, it looks like it's इससे in a अच्छा यूला को sea डाल of pink देते। and blue stars. That's हाँ pretty यूला को cool. डाल देते I इससे remember अच्छा। this well. I recognize this well. क्या यार Wait, बाइजू yeah, क्यों yeah, यार मतलब? isn't this the whale that the कुछ भी traveler मतलब, saw हाँ? in Child's vision at the मजाक की end भी of हद होती the है। version 4.1 Weapon Archon looks quest? good, हाँ weapon Yeah, काफी it's अच्छा है। the same one. देवज्योति भाई। After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly creature has at long last broken ये the तो चाय seal की and उम्मीद लग रही descended है। upon Fontaine. Ooh, it's real big. It feels like it might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this भाई, is the ये type तो of मोबाइल पे opponent खेली that we जाएगी, can ये just मोबाइल पे? brute force our way through, you मो- know? मोबाइल का लोड Exactly. पड़ेगा In भाई। the first phase, it will use ये its बॉस मोबाइल का gigantic लोड लेगा। size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend. Wow, with this there's no one. new Oh this boy. new Okay. this okay, new boss okay. design is so cool. There हाँ also cool है seems यार। to be sort of a Cool तो है, progress बहुत bar next to the boss's cool तो है HP ये। bar. Yeah. What's that for? न्यू Okay, वीकली बॉस है ये। Since we can't outfight दिव्य- it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay. Wait, is somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? I guess here it is. Ooh. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. Mm-hmm. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Snapdragon 8 Oh, plus man, Gen this 1 will boss looks be really tough. push its limit. What happens if we, for वो some तो reason, सही बोला can't आपने। defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the Challenge Failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest.
Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Nice, nice. ये अच्छा है. I love that. Finally. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. ये noob वालों के लिए जो noob that है was a game lot पे. of information, wasn't it? noob वालों Can we के take लिए a short lower little break difficulty while कर we लो. have a look at the second redemption code, maybe? Pro player के लिए नहीं करना Let's do चाहिए. नया redemption code आ गया. अरे कनेक्ट हो रहा है क्या? Shit भाई. कनेक्ट होते होते जिंदगी चली जाएगी. Nice. UP. Yeah. Yeah. NTQB2. NTQB2. मैं तो हाई डिफिकल्टी पे खेलूंगा. हाँ मैं भी सेम. मैं तो हाई से खेलना पड़ता है. सब तो हाई खेलते हैं. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, you know, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Furina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Furina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Furina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Uranea. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. What the hell is happening? And take a look at this. The foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all ये तो लग रहा है कि And the water गांव में जब वो doesn't होते हैं ना look बड़े-बड़े quite पेड़ right. Like it's cloudy मतलब or बहुत something. creepy वाले Do you पेड़ see होते हैं that? वैसे लग रहा है गांव में. Exactly. It seems like Furina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial Can you pin the quotes, please? Can you pin the quotes? Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. To learn more about the story behind the new Aranea's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Aranea's Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Actually, it looks like that's the very next stop on Furina's itinerary. So let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same.
Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. उनको भी तो पेट बढ़ना है तो I करना तो know. पड़ेगा. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm नया waters. एरिया एक्सप्लोर करनी पड़ेगी. लग रहा है I बहुत want प्रिविलेजेस मिलेंगे. answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. Very interesting This tower. is not limited to the 2 new regions in this update. The बकरे हैं तो prophesied बकेंगे woke up ही. new life forms in other Lol. places where destinies intersect. I don't do Oh, destinies! Destinies! human-shaped In monster certain formed underwater from the cape, new life form is agglomeration of it countless has greater drops of and more water. diverse powers of transformation while in combat. लगता है फुरीना So का don't let your फुरीना guard का down, ascension travelers. boss drop है. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. मैंने तो अभी तक 4.1 वाला भी स्टार्ट नहीं किया. एरिया अच्छा कर लेना. But Furina's itinerary मैं तो doesn't कल stop से there. चालू कर देना. Oh wait, it मैं looks तो like आर्कोन she's क्वेस्ट नहीं arranged किया. to वो spend करना some पड़ेगा time बैठ with के her जोरो भाई. कल करूंगा. Furina is pretty Mute personable. करके Who's to करूंगा. say? She Click might even मारता make an रहूंगा. appearance at the events taking Mouse place in पे. Fontaine. टक 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 Speaking करके. of, let's move क्या on कर to सकता the कुछ event. चारा नहीं. करना तो पड़ेगा. All right. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission Oh, to new, investigate event the है, huh? rumors of water imps near Araneus Island. Freminent free का another मिल रहा है. investigation. I know. Free का Freminent मिल रहा है. And Fremine seems to be involved. जिसके पास नहीं That उसको little मिलेगा एक कॉपी. clockwork penguin next to him पास नहीं है must तो be मुझे one of his मिलेगा other पहला कॉपी. companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the अभी shore. मन नहीं करता As the एक्सप्लोर करने story का. मेरा भी goes, नहीं करता यार. children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be पहले pretty मन afraid करता of था. that अभी creature. I know, right? पता नहीं यार अभी It क्या does हो गया. seem a मेरा little वो भी नहीं unusual करता. for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be अंदर का वो some other reason. चला गया. समझ रहे. Hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? मोटिवेशन नहीं मिलती यार Absolutely. करने का. In this event, we'll be helping Explore करने Fremine make some improvements to this little clockwork बहुत penguin. कॉलेज वर्क There है will be इसलिए a नहीं कर total पा of रहा. 3 main stages to the event. I have As lost for my the motivation. first stage, we'll repair the penguin by explore. fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out पहले on तो our अच्छा journey. लगता था. अभी तो I यार love that. मन नहीं As our करता. journey मेरा भी. progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons. कभी कभी गाना सुन के कर लेता Which हूँ. brings कान us पे to the गाना सुन second के. stage of the event, तो using कभी an कभी मन echoing लग जाता है pulse तो. to search लेकिन वो भी underwater and find the ज्यादा items that समय के लिए need नहीं the होता. penguin. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it लेकिन seems like the अगर perfect weapon निकालना opportunity है for तो a little penguin buddy मैं to shine. grind करूंगा पागलों की तरह. Exactly. In the Weapon third निकालना stage है of the तो event, grind the करो. clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be पता guarding. चला कि भाई मेरे का Of weapon course, मिल the सकता है clockwork तो मैं penguin will provide different grind buffs करूँ. in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. New Let's event, see. fighting event. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. अरे यार, पंगा यार. Kaeya, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's fantastic पुराने fiesta. event Oh, मत and दिया करो भाई. speaking of fun, पुराने event क्यों guys, दे रहे हो? I think I recognize some कुछ तो familiar नया. faces. अरे यार. Bongo Head, it's time छूतिए to साले. shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine,
The gameplay has also been optimized. मेरा mood पूरा खराब कर Previously, we दिया भाई. led the little fungi in battle भाई ये against the पुराने event fanart. क्यों दे रहे This हो? time, we'll have the opportunity खेलना to मुझको. challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous Fungi किधर भी आ gels to जाते हैं instruct भाई. the little fungi to unleash powerful मतलब skills. इनको कुछ काम तो करना नहीं है. Travelers will पता hopefully नहीं enjoy ये लोग playing बस with the fungi हम लोगों more का than पैसा खा रहे ever. हैं भाई होएबक्स Here's वाले को. hoping. We ये actually होएबक्स have a वाले little बस note पैसा to उनको pass पैसा along from पर our चाहिए. developer friends. भाई नया इवेंट डालो भाई. 4.2 आर्कॉन आ रही है इस पे. To दो make नए the इवेंट little तो डाल fungi दिए and some तुमने other ठीक है. events permanent, so ये travelers फंगाई can क्यों ला play रहे at हो? any कुछ अलग time. तो डालो The भाई. team feels that the current design doesn't ठीक है adequately ये sustain long-term पहला दो इवेंट जो gameplay. दिखाया ये So नया है. they're going to continue ये तीसरा iterating, वाला रीजन क्यों optimizing, दे रहे हैं and भाई? improving this event while also यार working थोड़ा hard to develop इनोवेटिव बनो, थोड़ा interesting content क्रिएटिव that बनो, is थोड़ा relevant अलग to the डालो. overall game. पुराने तो Thanks, क्यों Debs. सुमेरु का ताल्लुकात ही नहीं है फाउंटेन के साथ. फाउंटेन के ताल्लुकात ही नहीं है सुमेरु के what साथ. else Furina's सुमेरु itinerary फाउंटेन का has in ताल्लुकात ही नहीं है. तुम store. क्यों रीजन कर रहे हो ये Oh, इवेंट? it's the graph भाई adversarial technology पागल हो क्या? पागल हो experiment तो log. I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this नाम is तो where the देखो traveler लिविंग comes in. फंगेन. Okay, you're not wrong. भाई But यार मजाक Pauline's की बात request होती है. is actually pretty मतलब. reasonable. To क्या receive ही बोलूं rewards, यार. I'm simply not submit surprised. photographs of 5 different sample चिल्ला के भी types क्या to match करूं the यार. छोड़ो जाने characteristic दो. that's given on each day. अभी आदत सी लग गई है. You can also exchange these अभी samples आदत with से your लग गई है. friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from बोलते हैं ना Pauline. इंसान आदत से मजबूर. That's वही right. हालत हो रहा है. It's the zoom lens we Shortage of mentioned content. during Charlotte's character introduction. Oh, how fun! To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold the elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh. Double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. It seems like Furina has also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters to ये take नया लग रहा है. advantage of the buffs brought about by the अच्छा ये leyline ठीक है. ये are तो also फाइटिंग great ways इवेंट है. to ये come तो out on ठीक है. top. चलो. That's right. And travelers who are more confident in their combat Okay, skills ये थोड़ा ये choose पुराना to नहीं है, jump नया लग रहा है. straight to the final challenge. बस बफ वफ ये सब Also, मतलब the leyline ये सब तो ठीक overflow है. event will return at मतलब the end फाउंटेन of पे ही version है. 4.2. ठीक है. चलो Now might ये be मान the लिया. perfect time to start building ठीक your है, ठीक है. parties. ये नया है. Hopefully, you're all excited for the fabulous Inazuma का events नहीं है, that version फाउंटेन का ही है. 4.2 has in store. But there are still more surprises to share. Yay! Oh, let's get into them. Well, before we get into them, let's Genshin take वाले a new quick players को break to ज़्यादा have a importance look at देते हैं the old final players का. redemption code for today. हाँ वही See you है. in a क्या bit. कर सकते हैं? Okay. थर्ड रिडेम्पशन कोड आ रहा है. थर्ड रिडेम्पशन कोड. चलो डाल दिया. $1996 के ANE
Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Furina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double! Double again! The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. Ooh, and in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Good start for weekly boss. A new story key privilege has Genius. also been added so that Invocation, returning TCC travelers can update, enjoy Stellar new Reunion story update. quests and hangout events. Amazing. Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. Oh, nice, And nice. hopefully, travelers won't be overwhelmed by Very good, some very influx good. of quests anymore. Well done. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. Finally, Awesome. finally confusing नहीं बनाया है तो Great. ये पहले and नहीं it कर seems सकते like थे that's Hoevers all we वाले have for the latest version update. I guess that means it's time for the चलो, 4.2 good special eye, program दुरुस्त to eye. come to a close. Oh, I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're going to get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe Did I miss it'll have a nice something? ending in हाँ 4.2. third code We'll miss have कर to दिया see. आपने But that's it for दिया the है version 4.2 special program. इन पे third Thank code you है so ऊपर much, everybody. देख लो And दिव्यज्योति see भाई you all in game. Bye. you can see you missed out on the third code but Zoro has typed the third code. I pinned Zoro Bhai's comment chat. You can see that. Dear traveler, your audience with the god of justice, Regina of many waters and the most popular celebrity in all of Fontaine. अच्छा ठीक है खत्म हो गया. All right, Genshin.
It was Smith Abbott's story quest. SMT story. SMTH Abbott's story quest. आपने मुझे फोन किया था क्या दिव्यज्योति भाई कल? मुझे कॉल किया था क्या? मेरे फोन पे एक मैसेज मिस कॉल आया। It was something about story quest. Yeah. अच्छा वो लास्ट वाला जो मैंने पढ़ा है। ओके या डिड बस ऐसे ही किया। अच्छा अच्छा कल मैं मैच देख रहा था, इंडिया और श्रीलंका का मैच देख रहा था यार। इस मैच में इतना डूब गया था मैं वानखेड़े स्टेडियम पे भाई। भाई साहब इतनी गर्मी कल खेल रहे थे भाई, प्लेयर की हालत टाइट हो गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे गर्मी होके हमारी हालत टाइट हो जाती है, तो वहां पे मैदान पे खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। इतनी गर्मी इतनी पसीना देख के मेरा हालत टाइट हो गया। मुंबई पे इतनी गर्मी। हाँ इंडिया जीत गया है, इंडिया जीत गया, देखा मैंने। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी हो चुका है ना। श्रीलंका को क्या कल मतलब धो डाला एकदम, मतलब क्या ही बोलूं मैं। श्रीलंका, मैं तो सोचा कि श्रीलंका भाई 55 पे आउट हो जाएगी फिर से। एशिया कप में तो आउट कर दिया, फिर से ये हो गया मतलब। मतलब हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है तो क्या ही बताऊं मैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की है अब बुमराह, शामी और सिराज ने तो काफी अच्छी की है। बॉलिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, टप्पे पे डाल रहे हैं। वैसे कोलकाता पे होने वाला है ना, ईडन गार्डन में होने वाला है। ईडन गार्डन में होने वाला है आपका। हाँ जोरों में 55 पे आउट हो गए वो श्रीलंका। मैं बोल रहा ये क्या हो रहा है भाई। ईडन गार्डन में होने वाला है दिव्यज्योति के यहाँ पे। कोलकाता में होने वाला है, कोलकाता। के 1 लाख लोग होंगे शायद कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पे। तुम्हारे टोटल लोग स्टेडियम के अंदर हो सकते हैं 1,90,000 या 1 लाख के आसपास लोग हो सकते हैं अंदर। बहुत लोग जम सकते हैं उस स्टेडियम पे। मजा आएगा रविवार को मैच। वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भाई, साउथ अफ्रीका। ये टीम टक्कर दे सकती है इंडिया को। इंडिया को पहले बॉलिंग करके उनको चैलेंज करना पड़ेगा।
मजा आएगा। हाँ, साउथ अफ्रीका की सबसे स्ट्रेंथ क्या है पता है आपको? उनकी बैटिंग। वो पहले बैटिंग करने से उनको लगता है कि वो कभी हारते नहीं है मैच। वो जो घमंड है ना, वो घमंड इंडिया तोड़ेगा। आप देखना बस, वो जो घमंड है ना, वो इंडिया ही तोड़ेगी। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन ब्लैक ही था क्या? शिट, मैंने ऑन करना भूल ही गया। चलो कराए, ये घमंड इंडिया तोड़ेगी। रविवार को होगा। मुझे लगता है फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका ही का होने वाला है। फाइनल का जो 19 तारीख को है, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका ही होगा, क्योंकि टॉप में तो इंडिया होगी। टॉप नंबर 1 पे इंडिया होगी, इंडिया और नंबर 4, तो मतलब इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा। और उनमें से इंडिया तो सेमीफाइनल जीतने ही वाली है, जीतेगी, पूरा भरोसा है, फाइनल भी जीतेगी। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होगा और बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। देखते हैं क्या होता है, वक्त आने पे पता चलेगा सब कुछ, है ना? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, वक्त आने दो फिर देखते हैं। वन गेम एट अ टाइम। उतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक मैच लेके चलते हैं, है ना? 9-7 के, वन मैच एट अ टाइम। बी ए 9-7 के। मैं तो सिर्फ अभी का सोच रहा हूँ, तो सोचता हूँ। हाँ, मैं भी अभी का ही सोच रहा हूँ, वैसे दूर का मैं दूर का मतलब कभी कभी निकल जाता है मुंह से, क्या ही कर सकते। मुझे दूर का सोचने का ज्यादा फायदा नहीं होता है, अभी का ही सोचते हैं, अभी का सोचते हैं, है ना? अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच हो। यार मेरे को मैच देखने का बहुत मन कर रहा है, वर्ल्ड कप मैच। यार टिकट बहुत महंगी है यार का 10,000 की टिकट कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा इतना? 10,000 की टिकट है भाई, अभी तो बहुत रेट बढ़ गया है ना। मिलेगा कि मिलेगा रायोटलेसली मिलेगा, क्या मिलेगा? नहीं नहीं दिया, नहीं दिया, मत दो, मत दो। उनका स्टाइल का भी कर देता हूँ। उससे अच्छा घर पे बैठ के ही देख लेना अच्छा है। हाँ यार, सही बोला आपने जरूर।
10,000 की टिकट भाई, मतलब इतनी महंगी टिकट कौन खरीद पाएगा भाई? इसका रिडेम्पशन कोड आया, ये टाइप कर लेता हूँ। मेरा 75 का पीटी 90 पुल से गारंटी है क्या आपका? आपका गारंटी है 50 है? वैसे पुल करना है आपका फुरीना तो मुझको बता देना आप। बजे भाई मैं तो सुबह बुधवार को लाइव स्ट्रीम करूंगा, करने वाला हूँ। वैसे गेम साउंड नहीं है ना? अच्छा गेम 50-50 है। अच्छा 50-50 HT8BX7 JL 8। अरे अरे ये नहीं, 6B9BF 6B9B FPK 58Q3। पीटी कितना है देखिए, मुझे गोयना फैन चाहिए था। 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 की पीटी। सत्रह हो गया ना? ओके वेरी नाइस। चला कोई ना फैन नहीं देगा भाई, कोई ना फैन मेरे को नहीं देगा। मेरी 65 की पीटी हो गई 6 साल में, क्या करना? सुनो भाई, मैं पता है इस बैनर पे 300 पुल हो गया है मेरा, इसमें 300 पुल हो गया। मैंने ब्रोनिया पिक की है, मैंने इसमें ब्रोनिया पिक की है, ये देखो लेवल 1 की पड़ी है। वैसे मेरे पे यहाँ पे जिंगलू, पुशवैन, काफका, जिंगियन, लूनेड, ये सब है। लूका शैम्पू, हिमिको भी है इसमें। रिसेंटली गुइनेवन भी एक कॉपी मिल गया, और कल ही शायद, या हाँ कल ही मिला था ब्रोनिया, मैंने पिक किया 300 पुल पे। मेरा तो ऐसे ही पुल कर रहा, मिल जाए तो हाँ, मिल गया तो बढ़िया, मजे ही मजे आप।
मैं तो अभी इसमें अर्जेंटीन निकालूंगा। मॉमी काफका। हाँ काफका है ना, मेरे पास काफका है। काफका है, काफका है। काफका का लाइट कौन भी है, सिग्नेचर लाइट कौन। E1 है मेरी पे, E1। चाहता तो मैं E2 कर सकता था, लेकिन मैं लूना निकाल दिया। मेरे को DPS चाहिए था इस अकाउंट पे तो। Six B 9B FPK 58Q3T। मैं गेम तो नहीं खेल रहा ये वाला, बट स्टोरी ऑसम है यार। स्टोरी बहुत स्टोरी काफी अच्छी है। स्टोरी बहुत अच्छी है यार। और एक अकाउंट है उस पर कर लेते। ये मेरा फ्री टू प्ले अकाउंट है। दो दिन से मैंने खेला नहीं इस दोनों अकाउंट पे। मुझे तो लगता है कि ट्रैवलर जैसा ही जेंशन का वो लोग यही से आया है। हाँ थोड़ा रिजेम्बलेंस करता है, लेकिन ये होंकाई इंपैक्ट थर्ड से काफी इंस्पायर्ड है। मुझे तो लगता है आप खेलो ये गेम, काफी अच्छा लगेगा आपको। टाइम मिले तो ये जरूर खेलना, बहुत अच्छी है, मजा आएगा। मिला तो मिला। ओ ओ 5 पुल, ओ ओ और 5 पुल दे दो। लगा है, स्टैंडर्ड पे करता हूँ, स्टैंडर्ड पे करता हूँ।
हेलो सौरभ भाई, हेलो आयन भाई। ठीक है, पुल्स मिला। क्या हाल है? आस्था मिला, आस्था। चलो यहाँ से 5 पुल मार देता हूँ। निकला तो निकला। ओ, ये क्या था? हम यहाँ से 2 ले। कैसा लगा लाइव स्ट्रीम आयन भाई? बताइए। टोपैज 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 टोपैज। लूका 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 नहीं चाहिए मुझे। चलो कोई ना, क्या है कर सकते। मैंने HSR का लाइव स्ट्रीम देखा नहीं है भाई, भूल गया। कोई ना, मैंने कोड डाल दिया है आयन भाई, मेरे कम्युनिटी टैब पे कोड डाल दिया है। HSR की कोड, जेंशन की कोड भी डाल दिया है। HSR की कोड देखना है तो मैंने कम्युनिटी टैब में चैनल पे जाके वहां पे मैंने कोड डाल दिया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वह कोड आप रिडीम कर सकते हो। अभी टाइम है, 12 घंटे बचे हैं। अभी 12 घंटे के अंदर वो कोड रिडीम कर लेना है। अकाउंट 300 मिलेंगे, 300 स्टेलर जेट मिलेगा फ्री का लोन। वैसे एक नया गेम आया है, मैं काफी दिन से खेल रहा हूँ, ये रिवर्स 1999। ये भी एक बहुत वैसे एंड्रॉयड और iOS पे ही है। ये थोड़ा टर्न बेस्ड गेम है, मतलब होकाई स्टार राइल जैसा ही है। ये थोड़ा मैंने खेला था, काफी अच्छा लगा मुझे। इसमें बहुत सारे वाइफूज हैं, लड़कियां बहुत है इसमें। हाँ मैंने देखा कोड, अच्छा देख लिया, बढ़िया। ये लोग आपने खेला है? ये मैंने खेला है, मैंने बहुत अच्छी गेम है ये, मुझे काफी अच्छा लगा। काफी वाइबूज है इसमें, मजा आया मुझे ये खेल के। लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा है। आई डोंट माइंड, आई मीन अच्छी बात है ना? तो कुछ कुछ लड़के है, कुछ कुछ लड़कियां, लड़कियां ज्यादा है इसमें। एंड्रॉइड में भी है, हाँ एंड्रॉइड में भी है। इसमें 6 स्टार कैरेक्टर होते हैं, 5 स्टार कैरेक्टर, 6 स्टार कैरेक्टर होते हैं और 5 स्टार भी होते हैं। ओ नया गेम और वाइफूस भी, हाँ नया गेम और वाइफूस भी है इसमें। मैं दिखा सकता हूँ एक बार ऑन करके। ये मेरा अकाउंट है, इसमें मेरे पे 3 6 स्टार कैरेक्टर अभी के लिए अर्ली अर्ली मिला था मुझे। एक पे हार्ड में मिला था, सॉफ्ट पिटी में मिला, और 2 अर्ली मिला था। वही है। ये देखो, ये है मेरा कैरेक्टर। कैंडी मिला मुझे। ठीक है, कैंडी। ये मेरा कैरेक्टर है, सेंचुरियन 6 स्टार कैरेक्टर। तो मैं कैरेक्टर्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वाइफूज है मेरे।
ये 6 स्टार कैरेक्टर है, ये 5 स्टार है, ये 6 स्टार है, ये 5 स्टार, ये 4 स्टार है, ये होते 3 स्टार। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं। 6 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, 1 स्टार होते हैं। सभी स्टार के कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे। सबसे हाईएस्ट रेटिंग है 6 स्टार का, फिर उसके बाद आता है 5 स्टार। और हर कैरेक्टर के अलग अलग कपड़े भी है। गेम तो अच्छी लग रही है। हाँ, हर कैरेक्टर के जब आप कैरेक्टर असाइन करते हो तो आपको एक नया कपड़ा मिलता है। ये देखो, ये मेरा पुराना कपड़ा, मैंने इस कैरेक्टर को असाइन किया। असाइन करने के बाद मुझे ये कपड़ा मिला, ठीक है। तो ये कपड़ा चेंज हो गया, जैसा कि इसका देख सकते हो आप। इसको मैंने ये मेरा पूरा इसको मैंने असाइन नहीं किया था। असाइन जब मुझे शुरू मिला था, शुरू में ये ऐसा दिखता था, और जब मैंने इसको असाइन किया ये अभी ऐसा दिखता है। तो ये हर कैरेक्टर पे होता है। 4 स्टार कैरेक्टर तक ही होता है, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार नहीं होता। 6 स्टार 5 स्टार और 4 स्टार कैरेक्टर का ही कपड़े बदल सकते हो आप। उसके नीचे का स्टार का कैरेक्टर नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसका भी है, इसका भी कपड़ा चेंज हो सकता है, इसका भी कपड़ा चेंज होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। सारे कैरेक्टर के अलग अलग कपड़े। इस लड़की के भी है, लड़की के भी है। काफी सारे लोगों के कपड़े चेंज है। मैंने इसका भी कपड़ा मैंने चेंज किया। इसका भी कपड़ा है, इसका भी है। क्या 3 कपड़ा है वो, इसमें 3 कपड़ा है इसका। ये खरीदना पड़ता है, बैटल पास तो मिलता है, लेकिन ये फ्री का मिलता है। तो यही है। गेम अच्छी है, फ्री का है, फ्री टू प्ले कर सकते हो डाउनलोड। अच्छा चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं मंडे को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, लाइक ठोकने के लिए, सब्सक्राइब ठोकने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। और मिलेंगे मंडे को, सोमवार को मिलते हैं 3 साढ़े 3 बजे आऊंगा। बुधवार को सुबह स्ट्रीम करूंगा फुरीना का पुलिंग, और जिसको पुल कराना है मुझे बता देना, मैं पुल कर लूंगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय, लव यू एवरीवन, टेक केयर।